हे एवरीबॉडी। सो आज हम ये बहुत ही सटल सा लिफ्टेड सा लुक करने वाले हैं एंड मुझे कहीं जाना था तो मैं उस टाइम वॉइस ओवर नहीं कर पाई। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम प्रोडक्ट साइड बाय साइड एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करना मत भूलना। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक क्लीन वेट टिश्यू लिया है मैंने एंड मैं अपना पूरा फेस क्लीन कर रही हूँ। सेकेंडली एक हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम एंड दिस इज़ फ्रॉम इंडल्जियो। नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र और मैं अभी निविया की सॉफ्ट क्रीम यूज़ कर रही हूँ ऑन माई फेस। अब मैं अपने पूरे फेस पे क्रायोलॉन का इल्यूमिनेटर प्लस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगला प्रोडक्ट है हमारा इंडल्जियो का रोज़ गोल्ड ऑयल। नेक्स्ट मैं मेकअप स्टूडियो की फेस सेट पैलेस से एक डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ ऑन माई डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन और मैंने पीएसी की 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके अपना शेड बनाया है। अब नेक्स्ट मैं एलए गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड क्रीमी बेज। अब हम यूज़ करेंगे मेकअप स्टूडियो का ट्रांसलूसेंट पाउडर। अब मैं लूँगी एक मैक का कॉम्पैक्ट एंड सारा पाउडर डस्ट ऑफ करूँगी जो भी एक्सेस पाउडर है मेरे फेस पे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप और मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड पैलेट और मैंने एक बिग फ्लफ़ी ब्रश में बहुत ही मैट ब्राउन सा शेड लिया है एंड आई एम ब्लेंडिंग इट टुवर्ड्स माई क्रीज। यहाँ पे मैंने एक बेज शेड लिया है जो कि मैं पूरी अपनी आईलिड पे स्प्रेड कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैंने एक रॉयल ब्लू कलर की आई पेंसिल ली है। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। अब मैं ले रही हूँ एक बेज कलर की आई पेंसिल जिसको मैं एज अ काजल अपनी वाटर लाइन पे लगाऊंगी और इसी से मैंने अपना आईलाइनर भी स्मच किया है। लोअर लैश लाइन पे मैं एक डार्क पिंक शेड को स्मच करके अप्लाई कर रही हूँ।
Now I'm taking a setting spray from PAC and applying it all over my face. अब अपने फेस पे एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं NYX का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का हाइलाइटर। अब बारी आती है ब्लश की और मैं यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का ब्लश पैलेट। 2 शेड को मिक्स करके मैं अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। Here I'm using Hyper Curl mascara from Maybelline. Next I'm using Superstay lipstick from Maybelline and this is in the shade Revolutionary. मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए, सो आई एम यूजिंग दिस लिप ग्लोस फ्रॉम LiQWYD ओवर माय लिपस्टिक। Okay, so this last step is the game changer. I'm using this eyebrow pencil from Forever 52 to fill in my eyebrows. And this is our final look. Please let me know in the comment section what you feel about the look, and also subscribe to my channel if you haven't for future videos.